I want to know what exactly happened, because we've seen a few footages. There are different stories going on around. So I need to know what exactly happened. What I'd like to talk about is that when we were going from the main road to the place of the incident, or the Pakistani Chowk, we had a 4 to 5 minutes walk. Okay. And when you're walking, when police walks in in a place, people start automatically, क्यों आए, क्या करने आए, क्या? अच्छा, इधर भी इस तरह लोग देखना शुरू हो जाते हैं, लोग पहचानते हैं क्योंकि साल से ज़्यादा अरसा हो गया सर्व करते हुए। सही। अच्छा, तो अच्छा तुसी उत्थे जाना है, वो जड़ा रोला पिया होया है, वो जड़ी बुड्ढी नू फाड़ लिया है, वो अगे। And then they carry on with their own activities. Why cannot the community take ownership of the fact that a woman is being harassed in broad daylight by men? And if we had a mob of 100, 150, 200 people chanting religious slogans, why did we not have a mob of 500 to 600 to 700 to 800 people shooting down that mob and telling them what they're doing is wrong? They'll take the woman to the police station, and whatever is going to ensue is going to be the legal course of action as per the law of the Islamic Republic of Pakistan. Sialkot hua, Jadamwala hua, abhi wo farig nahi hua tha to Lahore ho gaya. Exactly. Let's talk about this. Yes. और उधर जब हम पहुंचते हैं तो फिर shutters down है, the woman is huddled, hugging her husband, afraid, trembling. My mother couldn't watch the video. She was like, I couldn't watch the video. I started crying. And I was like, imagine what the woman was going through. So we take her out, we tie her hair, because हमारे पास तो है ना, जिस समय पहले पॉडकास्ट में भी आपकी इधर बात की थी कि एक डेफिनेशन है ना कि अच्छी औरत कौन सी है, बुरी औरत कौन सी है। तो मैंने कहा इसको तो मतलब बाल देखेंगे उसके ऊपर तो चीखें चूखे शुरू हो जानी है। फिर मैं बाल बांधे, फिर उसका मैंने कहा कि टखनों से नीचे अगर कुर्ता नजर आ गया तो वो भी शुरू हो जाना है। फिर हमने उसको उड़ूंगा दे के पेट पे बांधा, फिर बुरखा डाला, सर पे चादर दी। That's when we took her out. So it was. And you were telling everyone to calm down as well. Because I've heard there were like people with guns over there as well. People with guns, they were chanting that we have to behead her. So were you prepared for all that? We are already prepared. There's this Newton, which पिछले दिनों किसी से बात हुई तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा you're already prepared. Why you're prepared? Because chance always favors the trained mind. So once you're used to dealing with such situations over and over and over and over again, after a while you just come across an incident which blows up, right? So we dealt with it 2 weeks back in Firdaus Market. Prior to that, we dealt with it when there was a genuine case in Ichra again. और उसके अंदर तो फिर we went home at 3 in the morning. वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए नारेबाजी उन्होंने इतनी की थी ना उस इंसिडेंट पे। तो बस ये है स्टोरी। तो आपने पहले भी इस तरह की सिचुएशन हैंडल देखी हुई। सही। लेकिन I don't, like you were saying, it actually bothers me a lot as well. लोग तमाशा देखने भीड़ इकट्ठी हो जाती है. There's a भीड़ of people, and if they come together, there's a भीड़ of people who would do nothing. And make a video while somebody is being kicked in the gut. Is being burnt. Is being beheaded. That is the apathy of the society, and that leaves a question mark on our collective consciousness. And the problem is they do it in the name of religion. They think Allah wants this. No, you know, this is very wrong, basically, what they're doing. When you talk about mob psychology, na, you've got different fronts and factors attached to it. Because there's collective responsibility. No particular individual would be taking responsibility. Right? So the bare minimum of you acting as a human falls so down that you become absolutely uncivilized. Achha, this mob could be triggered either by religion, or could be triggered because of any social factor, or could be triggered because of any political factor. The idea, when you asked me what you were thinking, whenever a police officer enters such a situation, he or she thinks about how they're going to get the person out, get the person away, save their life, and disperse the mob. The ideal way to disperse the mob is to get the people who are the miscreants or the ones who are shouting down. एक होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, गैदरिंग्स में भी होता है, एक नारा लगाते हैं, पीछे कहते हैं हाय 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 होय 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 होय, है ना? तो वो जो नारा लगाते हैं ना, उसको बेसिकली निकालना होता है। उसको निकाल के आप अलग कर लो तो आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन नहीं, वो प्लेकेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो these are certain things that we look at when we enter a situation. फिर आता है सबसे पहले कि कोई ऐसी चीज तो नहीं जो नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह इधर वो स्टोव था जिसको आग लगी हुई थी, somebody decided to shoot it with a fire at it. It would have resulted in a blast.
Yeah, I mean, I don't understand इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अगर even if I'm just hypothetically, even if she was wrong, how does that make you right? You're not supposed to. Our religion doesn't teach us to, do this kind of stuff. हमारी जो बात हुई थी उधर भी वीडियो में जो बात वायरल हुई उसमें भी हमने यही उनसे कहा है कि रियासत का एक कानून है. Exactly. एक कानूनी रास्ता है. आपके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वो कानून इम्प्लीमेंट होता है, हम ही करते हैं इम्प्लीमेंट. हमने किया है इम्प्लीमेंट, आपके सामने किया है. बात भी हम यही बात कर रहे थे उधर कि आप मुझे एक इंसिडेंट बता दें जब से मेरी पोस्टिंग हुई है जहाँ आपको लगा मैंने नाइंसाफी की है और जहाँ FIR बनती थी मैंने नहीं दी. When it comes to इस तरह के इश्यूज के अंदर जहाँ FIR बनती थी मैंने ना दी हो तो आप बताएं. तो उधर फिर जाके वैसे कानूनी रास्ता इख्तियार करें. बिल्कुल. अगर गुस्ताखी नाउज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह हुई है तो हम लोग, हमारे पास रियासत का एक कानून है. हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये छोटी सी बात थी. But you're not scared of these situations anymore, are you? No, I was never scared. Fear is a natural phenomenon. Yes. And fear either can be utilized in a positive sense or a negative sense. Yes. Either when कुछ आपने नोटिस किया होगा जब कोई बड़ी fearful सी situation कुछ लोग होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना? They start smiling. हाँ कर लेते हैं. So it's very important कि you need to utilize whatever you're feeling because nobody wants to die. Yeah. In a brutal manner by being shot in the head or being lynched by a mob. Nobody wants that for themselves. So but like when you... But आपकी कोई professional responsibilities हैं. Exactly. तो when जब आपकी professional responsibilities की बात आती है तो फिर you should not be fearful. Yeah. But like when you went in and you saw her for the first time, वो किस कंडीशन में थी? What did you talk to her about? आपका first impression उनकी clothing देख के जिस पे इतनी नाराज हो गए थे लोग. What was your first impression about the situation? अच्छा, जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं ना, फिर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल, अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो तो उधर बहस नहीं करनी और ना ही आपने अपना ओपिनियन देना है. हमारे कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने दिया वो उस पर भी देखो जी वो आया उन्हें वो कह देता थी वो आया नाउज़बिल्लाह उन्हें वो कह देता उन पुलिस भी समझेगी थे ऐसे हो. Never give your own opinion because you should not. I am a tool of the state. I have been recruited for a certain job. I need to perform that job. And that is about it as far as Sheharbano Naqvi as an ASP is concerned. Yes. Or any police officer for that matter. Sheharbano Naqvi did not go there to analyze the situation and critically remark on the kind of clothes that she was wearing. Okay. Sheharbano Naqvi went there to placate the situation, ensure no material loss was done, and ensure that the life of the girl was saved. That's it. That is all to Sheharbano Naqvi. ठीक है? अच्छा, we enter. She says मुझे मार देंगे. मैंने कहा आपके पास वो है बाल बांधो. उसे कि मुझे मार देंगे. अब उसे बाल बांधो. मैंने कहा पोनी है. कहती हाँ है. मैंने कहा पोनी निकालो. कहती आप मुझे छोड़ के ना जाए मेरे हस्बैंड को दूर ना के. मैंने कहा बाल बांधो. ठीक है. कहती मुझे खौफ आ रहा है. मैंने कहा कुर्ते को रुंगा दो इसको गांठ लगानी है. ठीक है. बुर्खा डाला सर पे दुपट्टा दिया. अगर आप उसके साथ उस टाइम एंगेज करने लग जाती मैं और मैं कहती तुम्हें कुछ नहीं होगा तुमने परेशान नहीं होना तुम्हें ये नहीं होना जो कि एक ऐसा ह्यूमन मुझे करना चाहिए था. But that would have resulted in us losing time. Okay. Where we could have saved her life. Okay. Yes. So उसको दिलासा देना या उसको बताना उसने क्या करना है या उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो बाद की बात है. पहले we do what we have been recruited to do. First we do our job. Yes. Then we act as somebody else. आपको ये नहीं सोचना चाहिए when you look at a doctor आपको ये नहीं सोचना चाहिए हाय आप कैसे कर लेते हैं. आपको ये सोचना चाहिए बहुत अच्छी बात है आप कर लेते हैं.